Hi guys, in this video we are starting the next phase of our playlist, that is phase 2. We are covering the most important concept of this playlist, in which the whole playlist is depends on majorly. It is Kubernetes. In the next video we will see how to set up an Kubernetes cluster on AWS. Make sure after this video you should have an AWS account, otherwise the next video is of no use. It's free, you can make it for free. So let's start. What is Kubernetes? What is in Kubernetes? We also write Kubernetes as K8s. In future, if you see me writing this K8s, it means I'm talking about the Kubernetes. What is K8s? Why it is named as K8s? Because first letter is K, last letter is S, and between them there is 8 characters. That's it. That's the simple naming, K8s. What is Kubernetes? Kubernetes is just a very simple definition of Kubernetes. It's a container orchestration tool. What is it? It is a container orchestration tool which is developed by Google. Before jumping into this, what is orchestration is, I'm going to tell you before Kubernetes how things works. For let's say you have your backend server deployed on this EC2 machine. Let's say if there is more traffic, we add a load balancer here, and the request from load balancer goes like this. I'm correct? Yeah. And the user hitting this request. So before Kubernetes, things work like this, in which when there is more traffic we have to manually increase this. If this any server goes down, we have to delete it, then make it available on the another EC2 machine. We have to monitor continuously this. We have to manually change on this. That's what Kubernetes solves. It provides us auto heal, auto deploy, and automatic scaling. In Kubernetes self auto deploy the containers, and it manually auto scales according to the traffic coming to our cluster. That's how previous things are going on. Now let's see what is orchestration. Container, what we know, we already know what is container. Container is a running instance of an image. What is an image? Image in which we package our app with its config files, libraries, dependencies, and we run containers from the image. That's it. Containers we already see on the Docker video. Let's talk about what is orchestration.
Orchestration work is, if you know about the orchestra, that's how an orchestra, that is an orchestra in which this main person standing on the center is an orchestrator, and it is managing these peoples holding these violins. कौन सा कब बजेगा, किसको बजाना है, कब किसको नहीं बजाना है, वो ये बताता है सबको. For let's say this is the main. If you understand this picture, you understand the Kubernetes whole cluster. It is an, this image is defining you and cluster. There's the same thing in this picture. What is going on, there's the same thing, ditto same, जो कि क्लस्टर में होता है. बस वो टेक्निकली टर्म्स पे होता है, ये थोड़ा फिजिकली है. यू कैन से दैट सेम कंसेप्ट. orchestra. Let's see what is in cluster. What is in cluster? A bunch of worker nodes and a control plane node, or previously it is known by the master node as, makes a Kubernetes cluster. What is it? Let's say this is our cluster. That's an important interview. Interviewer will definitely ask about Kubernetes architecture. That is our Kubernetes cluster. You can make this cluster anywhere, even inside your machine, local machine, by using kind, minikube. We are not going to use them. We are going to make cluster on AWS. That's how production works. In production you will not use the kind cluster. What kind do? Kubernetes inside Docker, that is kind. So in cluster there is one master node or control plane node and bunch of worker nodes. Can be more. I'm taking example of 2. That take its specific size, same size. So this is our control plane node. Node, what is node? If you are curious about what is node, node is nothing but a machines. These are machines running up. That's why the tool is made, Kubernetes, to orchestrate these machines. What are these? These are worker nodes. Worker node. कॉपी हो जा भाई. अरे worker node. Let's talk about first control plane node, how things work. This is the main node, the orchestrator, main person. This is this person that is managing all things, managing all peoples. It is the control plane. Let's see what this control plane do. Previously it is known as master node. So there are multiple components inside a control plane node. This is our cloud controller manager. There is API server. This thing is important.
very important. There is one key value store, etcd. There is a scheduler, also known as Kube scheduler, and there is Kube controller manager, Kube controller manager. These 5 things are running inside a control plane node. First, we are going to talk about the API server. What API server do? API server is the main component of this control plane node. This handles all the incoming requests, all the REST APIs from the kubectl command. I will tell you what is kubectl. From these components, inside the components, these handle these requests. From the worker node, the requests are coming on. The first the component handle is this API server. So what's the first point? API server handles all the incoming REST API request. What are REST API? REST API is nothing but a communication between client and server, where client requests something to server and server responds, and the server responds with JSON. That's it. Everything, every component, whether it is on worker node or it is on control plane node, it will first give request to this, then this API server will figure out what to respond. This is the front end of our control plane node. All the requests will hit API servers. Second thing, what API server do? It authenticates an authorization. What do you mean by authentication and authorization? Means it will authenticates and authorizes all API requests coming to this server, इसीलिए कि यह सही रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि जिससे हम अपने क्लस्टर पर कोई एक्शन ले सकें. If there is fraud, unknown request coming to this cluster, so API server will handle and reject them. What third thing API server do? It exposes metrics and health checks endpoints. What are metrics? Metrics means this control plane node health and performance of the control plane. ये पूरे कंट्रोल प्लेन नोड की हेल्थ, कितनी मेमोरी, CPU, सब चीज़ ये एक मैट्रिक्स एंड पॉइंट एक्सपोज करता है एक API सर्वर. And the next point is API server is the main communication hub. This API server acts as the central communication hub for the Kubernetes control plane. Every component will talk to this API server, will request to this API server, and this API server will respond according to the information. API server done. etcd. What is an etc? It is a consistent and highly available key value store in which the API server stores some key value pairs here. It is the Kubernetes specific, this cluster specific store. It can be used as a database also, but you want to learn about in detail, you can learn. This is a very interesting concept. But for now, for this playlist, इसको समझो खाली ये की वैल्यू स्टोरेज है.
जिसमें ये क्लस्टर का डेटा है. So next thing we will learn about this scheduler, also known as Kube scheduler. When the new pod is created, there's the first jargon we heard about, pods. We will see what is pods. When the new pod is created, जब उसको नहीं पता कि हम मेरे को किस नोड पे चलना है, तो वो काम स्केड्यूलर का होता है. स्केड्यूलर बताता है कि इस पॉड को किस नोड पर चलना है. दैट्स द स्केड्यूलर वर्क. यस. नेक्स्ट इज किस नोड पर चलना है, फिर वहाँ से क्यूबलेट उठाएगा कि किस नोड पर चलाना है. दिस scheduler will decide. This scheduler will send request to this API server कि इस scheduler कहेगा कि इसको वर्कर नोड 2 पे चलाओ. तो यहाँ से ये इस पर रिक्वेस्ट भेजेगा. वर्कर नोड में अभी हम चलेंगे. इसमें भी 3-4 कंपोनेंट होते हैं. तो उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूसली लूप में चलता रहता है कि कोई रिक्वेस्ट आई क्या इसके नोड के स्पेसिफिक. तो वहाँ से वो उस रिक्वेस्ट को उठाएगा और उस पॉड को अपनी नोड में चला देगा. दैट्स द स्केड्यूलर जॉब. नेक्स्ट इज क्यूब कंट्रोलर मैनेजर. What is Kube Controller Manager? It runs multiple controllers. What is a controller? It is a specific process, but in Kubernetes we manage all processes inside this binary file. It's single binary Kube Controller Manager. There are different types of controllers. For example, there is node controller. जब भी कोई नोड क्रैश होती है तो इसका काम होता है कि API सर्वर को बताना कि ये नोड कंट्रोलर का काम होता है कि API सर्वर को बताए कि ये नोड डाउन हो चुकी है, क्रैश हो चुकी है. देयर इज़ डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर. व्हाट इज़ डिप्लॉयमेंट? वी विल लर्न अबाउट इट. वी विल लर्न डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट्स इन next video. So what is deployment controller? डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर जो है वो चेक करता है कि डिज़ायर्ड रेप्लिका सेट्स चल रहे हैं कि नहीं. अगर चल रहे हैं तो उनको एकदम रेडी रखना. अगर नहीं चल रहे हैं तो उनको वापस चलाना. ऐसे ही रेप्लिका सेट कंट्रोलर भी होता है कि जितने पॉड रेप्लिकास चाहिए यूज़र को उतने चल रहे हैं या नहीं. अगर चल रहे हैं तो फाइन. अगर कोई भी टर्मिनेटेड है तो वो और पॉड्स बढ़ाएगा. अगर कुछ स्केल करा है तो वो, मान लो रेप्लिका सेट में हमने रेप्लिकास 2 से पॉड, आपको, मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जस्ट लिसन. मान लो कि हमको एक पॉड के 4 रेप्लिकास चाहिए, 2 से 4 कर दिए हमने. तो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर जो है, ये तो एक सिंगल फाइल है, उसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस होगी रेप्लिका सेट कंट्रोलर. वो जो है वो 2 से 4 लाने का काम करेगा, 4 पॉड रन करेगा. अगर फिर 4 से 2 करनी है तो वो रेप्लिका सेट कंट्रोलर का काम है कि 2 को टर्मिनेट करे और 2 को ही चालू रखे. दैट्स इट अवर क्यूब कंट्रोलर मैनेजर. क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर, वी विल सी. It's a cloud specific concept. Firstly, let us complete this worker node architecture. Let me add some how things work. Cloud control manager sends request to this API server. API server sends response to this. How can I add arrow?
okay. Scheduler sends request to this API server. Kube controller manager also send request to this API server. API server stores the cluster key value pairs in etcd. Now let's come to this worker node architecture. Worker node, there is three things. There is one kubelet that we talk about in scheduler. What is it? Kubelet. Another is Kube Proxy. Kube Proxy. The last one is in which our pods are running. There can be multiple pods. Where it is running? It is running in an CRI, container runtime interface. We will learn about what is container runtime. We are already discussed, but I will let you refresh. If I can copy these all stuff, yes, I will copy this. Yeah, what is it? Pod. छोड़ो, हाँ ये सारे pods है. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पॉड्स. आप कंफ्यूज हो रहे होंगे. पॉड्स कुछ नहीं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लस्टर के अंदर. इस नोड के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर हमारे कंटेनर्स रन होते हैं. देयर कैन बी रन मल्टीपल कंटेनर्स ऑल्सो. एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स रन हो सकते हैं. टू रन मल्टीपल कंटेनर्स वी हैव टू एक्सपोज देम ऑन अ नेटवर्क. ठीक है. So for this, generally even in production we use a single container practice. In means in a single pod there will be a single container running. If we want to increase, मान लो हमको 2 कंटेनर चलाने हैं किसी इमेज के, तो हम 2 पॉड चलाएंगे क्योंकि एक पॉड में एक कंटेनर रन हो रहा है. मल्टीपल कंटेनर्स बहुत ही कोई कम यूज़ करते हैं. जनरली वी यूज़ 1 कंटेनर इन 1 पॉड. ठीक है. So what is pod? In which our containers are run. Now what is kubelet? It is an agent. What is kubelet? It is an agent run on worker node in the cluster. This kubelet makes sure that containers are running inside a pod, not running outside a pod. A container can run inside this. This is called a container runtime. Container can run inside this, but kubelet specifically manages this, that container should only be run inside a pod. How kubelet works? Yeah, my audio got corrupted. Where we are, we are going to cover what is kubelet. What is kubelet? This is an agent running inside a worker node. What it does, it makes sure that containers run inside a pod, not inside the container runtime. It run inside the pod. How it manages that?
For that we have to go back to the control plane. Let me zoom it. When the scheduler requests that a pod should run on this worker node 1, pod should run on worker node 1, this kubelet, every kubelet, the scheduler sends a request to the API server, run a pod inside this node 1. How not API सर्वर खुद जाके तो रन करेगा नहीं कि हाँ चलो मैं चलता हूँ वर्कर नोड 1 में और इसमें एक पॉड बना देता हूँ और उसको चालू कर देता हूँ, ना ही स्केड्यूलर जाएगा. सो व्हाट kubelet does, it runs a loop on this API server. if मैं यहाँ से ये और यहाँ से ये ऐसे बनाऊं, हाँ, जो API सर्वर है वो एक pod specs नाम से इंफॉर्मेशन इसको रेस्पॉन्ड कर देता है. ये एक लूप में चलता रहता है, कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करता रहता है मेरे लिए कोई पॉड है क्या, मेरे लिए कोई पॉड है क्या. तो API सर्वर जो स्केड्यूलर ने पॉड स्पेक रिक्वेस्ट करा होता है वो इसको रेस्पॉन्ड कर देता है kubelet को. देन kubelet रन दिस पॉड इनसाइड दिस कंटेनर रन टाइम इंटरफेस. What kubelets other things do, it manages the pod health, कि जो सही से चल रहा है कि नहीं, कंटेनर की हेल्थ कैसी है. इट कैन स्टॉप पॉड्स ऑल्सो. एंड ये सब कुछ करने के बाद ये API सर्वर को एक स्टेटस भेजता है, रिपोर्ट स्टेटस, कि ये पॉड है, इसके मेमोरी इतनी है, ये इतना CPU खा रही है. सो दैट वर्क kubelet do. That's the main thing inside a worker node. So next is Kube Proxy. What is Kube Proxy? It is a network proxy that runs, वो हर एक वर्कर नोड पे चलती है inside an Kubernetes cluster. इस Kube Proxy की वजह से एज अ डेवलपर मैं एक पॉड के अंदर जाके कंटेनर के लॉग्स चेक कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस Kube Proxy. अगर मेरा कंटेनर डाउन है, क्यों डाउन है, मैं उस पॉड के अंदर जाके उस कंटेनर में लॉग्स चेक कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस Kube Proxy. That is Kube Proxy. Next is container runtime. In Kubernetes worker node, in this worker node, कंटेनर रन टाइम जो कि एक सॉफ्टवेयर है, उसकी जॉब होती है कि इन कंटेनर्स को चलाना. व्हाट इज़ कंटेनर रन टाइम? कंटेनर रन टाइम बहुत सारे हो गए, जैसे डॉकर हो गया, क्रायो हो गया, कंटेनर डी हो गया. सो जो ये कंटेनर रन टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटेनर रन टाइम इंटरफेस. A container runtime only, a software that runs container. जो कंटेनर रन टाइम होता है वो kubelet से पूछ के, जो कंटेनर रन टाइम होता है, जैसे kubelet को कोई पॉड चलाना है, kubelet को कोई कंटेनर चलाना है किसी पॉड में, तो वो kubelet डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेनर रन टाइम उसको यूज़ करना है उस कंटेनर को चलाने के लिए किसी पॉड के अंदर. व्हाट इज़ कंटेनर रन टाइम इंटरफेस? What is container runtime interface? It is the same
lets kubelet to decide what container runtime to use to run container inside this pod. What is container runtime? It is a software like Docker. What is container runtime interface? It lets kubelet to decide what container runtime kubelet wants to run container inside a pod. So this is the architecture of our worker node, and this is the architecture of our control plane node. By making all this, we are this is the cluster, a Kubernetes cluster. What's left is this. What is क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर? जैसे क्यूब कंट्रोलर मैनेजर होता है जिसमें बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं, ऐसे ही क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर में भी बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं जो कि क्लाउड की सर्विसेज हैंडल करते हैं. फॉर लेट्स से योर एप्लीकेशन, योर pod is hosted on a load balancer service. सो ये कैसे लोड बैलेंसर चलाएगा? क्यूबरनेटिस कैसे चलाएगा? तो ये क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर का काम होता है कि उस क्लाउड सर्वर में, क्लाउड में AWS हो गया, उसमें जाके एक लोड बैलेंसर स्टार्ट करे और उसकी सारी इंफॉर्मेशन API सर्वर को भेज दे, जिससे कि कोई यूज़र चेक कर सके कि ये किस लोड बैलेंसर पर चल रहा है. सो दैट्स द वर्क ऑफ द क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर. So this is the architecture of the cluster, Kubernetes cluster. In next video we will see how to set up an elastic Kubernetes service cluster on AWS EKS. Make sure you have an AWS account. So today class was the theory based. Next class will be the practical based class. Thank you for watching this.